In GST, we have time of supply, section 12. We have to determine the time of supply. When we are supplying goods, supplier is liable to pay GST. He is removing goods. Removing goods means dispatching goods from the premises of supplier. So removing goods means dispatching goods from the premises, from the factory premises or warehouse. So supplier is liable to pay the tax. Okay, and we have to apply date of removal of goods, date of invoice, and date of receipt of payment. We have to check which is the earliest of these three. Okay, earlier of 1, 2, and 3. Okay, so first serial number you can see. This is the date of invoice 18/4/2019. Goods we have dispatched on 15th of April. We have given prepared bill on 18th April 2019, and we have received payment from the customer on 26th of April. Which is the earlier date? Write in the chat box. Quickly write in the chat box which is the earliest date in these three columns. Earlier of 1, 2, and 3. Very good. 15th, Ketal Patel. Sorry. 15/4/2019. Perfect. Next. Next is 15th date of dispatch of goods 15/5/2019. इनवॉइस पहले बना दिया था, इनवॉइस पहले प्रिपेयर किया है हमने 14/5/2019 and payment received 16/5/2019. Earlier of 1, 2, and 3. What will be the date? Write in the chat box. Invoice is prepared on 14th. So we will consider the liability of tax to be paid by the supplier should be 14/5/2019. Very good, Brushti. Next. 1st October 2019, we have dispatched goods. We have dispatched goods on 1st October and we have prepared invoice on 16th of October. Actually, invoice should be prepared on 1st October, not 16th October. And payment received is on 19th of October, which is the earlier date. Earlier of 1, 2, and 3. Date of removal, date of invoice और date of receipt of payment में earlier date है 1st October. Next, 4/12/2019, 6/12/2019 and 10/12/2019. इसमें earlier date कौन सी है? Earlier date कौन सी है इसमें? 4/12, 6/12 और 10/12. Brushti, perfect. What about other students? Write in the chat box. Earlier date बताओ. Four 12/2019. 5/2/2020, date of removal of goods.
Date of invoice is 10th of February and payment received is 8th February 2020. Date क्या आएगा? Write in the chat box. Answer given by Shifa. Perfect. Earlier date is dispatched goods on 5th of February. That is the right date for time of supply. Next example is day, time of supply of services. Serial number 1. Second column is date of service. We are giving services, providing services like banking services. Okay. For banking services, the invoice issued within 45 days. अगर बैंकिंग सर्विसेज है तो उसके लिए 45 डेज है. यहाँ पे हम लोग नोट करते हैं. For banks 45 days. अभी ये क्या दिया है, फर्स्ट केस और सेकंड केस क्या है, पहले मैं आपको टेबल समझा देती हूँ. टेबल में यहाँ पे पहले डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स था पहले वाले केस में. अब आप डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिख रहे हो. सर्विसेज अगर बैंकिंग की है तो आगे मैं आपको समझाऊंगी कि इनवॉइस 45 डेज के अंदर, सर्विस के बाद 45 डेज के विद इन बनना चाहिए. अगर उसके बाद बनता है तो वो सेकंड केस में चला जाएगा. सेकंड, डेट ऑफ इनवॉइस. आपने इनवॉइस प्रिपेयर किया है. नॉर्मली इनवॉइस उसी दिन बनना चाहिए जिस दिन सर्विस दी जा रही है, लेकिन विद इन 30 डेज बन रहा है तो फर्स्ट केस के अंदर हम लोग अप्लाई करेंगे. उसके बाद हमने पेमेंट कब रिसीव की, सप्लायर ने जब सर्विस दी, सर्विस प्रोवाइड की तो उसको पेमेंट भी लेनी है. डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विसेज. उसके बाद यहाँ पे केस का एक कॉलम बनाना है और केस 1 और 2 है. उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई, अर्लियर. यहाँ पे अर्लियर 1, 2 एंड 3 नहीं लिखना है. फर्स्ट केस समझाती हूँ, आप ध्यान से समझना. इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज. अगर आपने सर्विस दिया है तो इनवॉइस 30 डेज के अंदर बन जाना चाहिए अगर कोई भी सर्विस है तो. अगर बैंक्स की सर्विसेज है तो 45 डेज में आपका जो है सर्विस के इनवॉइस बन जाना चाहिए. बैंकिंग सेक्टर को ज्यादा टाइम दिया गया है. अब जब विद इन 30 डेज में आपने बना लिया है, सपोज फर्स्ट केस की बात करें, 16/7/2019 you have given services, provided services, and you have prepared bill on 19/7, यानी 17, 18, 19 थर्ड डे पे ही आपने थर्ड डे पे इनवॉइस प्रिपेयर किया तो 30 डेज के अंदर ही आ रहा है. इनवॉइस शुड बी प्रिपेयर्ड विद इन 30 डेज, यानी फर्स्ट केस में आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस 1. इनवॉइस अगर 30 डेज के अंदर बन रहा है तो आपको फर्स्ट केस में आ जाएगा. अब फर्स्ट केस में नीचे क्या दिया है, फर्स्ट और ये सेकंड है, ये सेकंड पॉइंट है. ये सेकंड, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों को कंपेयर करना है, यानी सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, whichever is earlier. इस केस में इनवॉइस पहले बना है, पेमेंट 24th को आई है, 24th ऑफ जुलाई. यहाँ में 19/7 को इनवॉइस प्रिपेयर हुआ है, तो दोनों में से पहले वाली डेट कौन सी है, राइट इन द चैट बॉक्स.
ओके 19 शिफा एंड वृष्टि, वेरी गुड। 16/7 को सप्लाई किया सर्विसेज, डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों को कंपेयर करना है, whichever is early। नेक्स्ट इज सेकंड पॉइंट, सेकंड सीरियल नंबर 2, डेट ऑफ सर्विस 6th of October, इनवॉइस 30 डेज में बनना चाहिए। आप देखो यहाँ पर 30 डेज में बन रहा है क्या? 17/11, यस और नो, 30 डेज में बन रहा है क्या? ये अक्टूबर है, 6th of October, नहीं बन रहा है ना? हेलो, यस और नो, विद इन 30 डेज बन रहा है? नो, ओके। तो ये कौन से केस का है? इनवॉइस नॉट इशूड विद इन 30 डेज, सेकेंड केस का है ये। तो केस में क्या लिखेंगे? केस 2 में क्या कंपेयर करना है? केस 2 में क्या कंपेयर करना है? डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, यानी सर्विस की डेट है आपकी 6th of October और पेमेंट की डेट है 18/11। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 6th of October। 6 अक्टूबर और 18/11/2019 दोनों को कंपेयर करना है, whichever is earlier। 6th of October is earlier। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड सीरियल नंबर 4/12/2019 सर्विसेज प्रोवाइड की है 3/12/2019, इनवॉइस प्रिपेयर किया है, इनवॉइस पहले प्रिपेयर किया है। अब जब इनवॉइस पहले प्रिपेयर करते हैं तो विद इन 30 डेज ही बनाया है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी को ही बोला जाएगा। कभी कभी इनवॉइस पहले बनाते हैं तो उसको विद इन 30 डेज में फर्स्ट केस में ही कंसीडर करेंगे। एंड डेट ऑफ पेमेंट इज 6th of January, तो फर्स्ट केस में डेट ऑफ इनवॉइस कलर रखियो 4/12/2019 and 3/12/2019, 6/1/2020। इन अभी इसका फर्स्ट केस में डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 3rd of December एंड 6th of January, दोनों को कंपेयर करो। 3 10/1/2020, 10/2/2020 and 15/2/2020। डेट ऑफ सर्विस 10th of January 2020, date of invoice 10th of February 2020 and date of receipt of payment 15 February 2020। अभी इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा क्योंकि ये डेट सेम आ रही है। आपको पता है यहाँ पे जनवरी में 31 डेज होते हैं, ओके। तो ये कौन से केस में आएगा? फर्स्ट केस में तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 31 डेज होते हैं। तो कौन से केस का है ये?
सेकंड केस का है, सेकंड केस का है तो सेकंड केस लिखेंगे, और सेकंड केस में डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट whichever is earlier 10/1/2020। डेट ऑफ सर्विस पहले आ रहा है 10th जनवरी 2020। नेक्स्ट 16th of February 2020, 28th of February 2020, 18th of February 2020। अभी इनवॉइस देखना है पहले बना है कि नहीं बना है। इनवॉइस सिक्सटीन और 28, विच केस इट इज? उसी मंथ में 28 को बना है तो ये फर्स्ट केस है। ओके, फर्स्ट केस है तो फर्स्ट केस में हमें डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट कंपेयर करना है। 16/2/2020। सिक्सटीन टू आएगा ना, विच एवर इज अर्लियर केस 1 में। 16 राइट है,